Yes, students. Now, in this video, I'll be sharing with you how to write acceptance and refusal of formal invitation. In my previous video, I shared with you that how to write formal invitation. In this one, I will let you know how to write acceptance and refusal. First of all, I will be going with the acceptance. How do we write acceptance? In this, I will let you know how to write acceptance. As I told you, in the formal invitation, we people write in third person, in the center of the box, and in the formal ones. Okay, again third person we people write in 50 words, we write in third person, we write. This is what is the formal invitation. When you will watch my video, then you will come to know then how do we throw a formal invitation when we have to invite the formal guest, a large mass of gathering. We always write formal invitation, but in your syllabus you have your acceptance as well as the refusal of the invitation. But how do we write? I will let you know how do we write. Now today I am going to take how to write acceptance. You just be cautious to know how do we write. It's very simple to write and you can score full marks into that. Again, I write it over here that first of all that you have to create a box like this, only in a rectangle box. Just create a box and here at the top write down acceptance. Here you write acceptance. Fine. Then suppose if I give you one question, suppose you are, your father's name is Mr. Sharma and you are being invited by somebody else. You are being invited by Gupta's family. Okay, now Sharma family is to convey their thanks to their Sharma's, to the Gupta's family. Okay, you are Sharma's family, and from Sharma's family we people have to write acceptance of invitation. How we will be writing it up? First of all, you will be writing over here Mrs. and straightway you can start it like this: Mrs. and Mr. Sharma. Mrs. and Mr. Sharma thank, because itself it's a plural. अगर यहाँ पे ये सिंगुलर होता, अगर खाली मिसेज होता या मिस्टर होता तो शायद मैं यहाँ पे थैंक्स लगाती, बट ऑलरेडी इट इज प्लूरल. विद प्लूरल वी नेवर यूज एस. इट विल कम मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक whom. Then write here Mrs. and Mr. so and so. Suppose I told you, suppose Gupta's family is there. Simple one. Then next one you will be writing for their. You will write for their. Do take care of their. I am not writing here your. As I told you, formal invitation is always thrown or written in third person. तो इसको हम third person में लिखेंगे. How we will be writing? Mrs. and Mr. Sharma thank Mrs. and Mr. so and so for their. Next one is a kind invitation. We will write kind invitation. I'm sorry if it is you can say be going out of the box. Invitation. Invitation for what? What is the purpose? To their daughter, to their daughter or son. Daughter so and say name. Suppose A weds B. Clear? Marriage. Marriage. Written here marriage. Purpose is written there. कि how you people have to write Mrs. and Mr. Sharma thank Mrs. and Mr. so and so for their kind invitation to their daughters A weds B, means marriage. In bracket you can write marriage. Just write it in a bracket marriage. Then write again date, day, time and venue. Of course, is it clear to you? Once again I write it over here that first you need to write the purpose of writing this one. Suppose you have written their purpose. Second one, again you have to convey your thanks while writing किस तारीख को है, किस दिन आपको बुलाया गया है और किस टाइम आपको बुलाया गया है, टाइम. एंड द फिफ्थ वन इज कहाँ पे आपको बुलाया गया है, वेन्यू. These 5 things are very very important. And after writing it, and the last line will be has a great pleasure in accepting it. In accepting it. Has a great pleasure in accepting it. That's it. This is how we write
दिस इज अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस। कहोगे मैम ये तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे 3 में से 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। Nothing else is to be written here. Once again I write it, and once again I make it clear to you. Suppose your father's name is Mr. A and you are being invited by Mr. B. अब Mr. A ने Mr. B को थैंक करना है। ओके, नाउ ही इज टू गिव प्रोवाइड द थैंक्स। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल वन, एज आई टोल्ड यू, वंस अगेन आई राइट इट ओवर हियर। सपोज दिस इज माई बॉक्स, आई एम क्रिएटिंग, दिस इज माई बॉक्स, राइट इट अप। ओके, this is my box, clear? Here you will write acceptance, and the top you will write acceptance. Okay, now here you will write here Mr. A. Now he is to thank, so now it is singular, thanks Mr. B for, अब your नहीं आएगा, for his kind invitation, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान दूसरे सिंगुलर को बोल रहा है। मिस्टर ए थैंक्स मिस्टर बी फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। कहाँ बुलाया गया था? व्हाट इज द पर्पस? सपोज ओपनिंग ऑफ द शोरूम, वो यहाँ पे देखकर कितनी तारीख को है, कितने बजे है, क्या दिन है, कहाँ पे बुलाया गया है। बस लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है? एंड हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। दैट्स इट। दिस इज हाउ वी राइट एक्सेप्टेंस। है ना कितना आसान? नथिंग इज डिफिकल्ट इन हियर जस्ट टू स्कोर द वेरी गुड मार्क्स। यस, इसी को हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। मैंने बेटा बोला आपको, अगर स्टार्टिंग में इफ इट इज प्लूरल, इफ इट इज मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर, देन यू हैव टू राइट थैंक। आप इस वाले जो मैंने आपको कंटेंट दिया इसको आप लर्न कर लो और इसको एग्जाम में एज इट इज़ कराना। बस ओनली गो फॉर द चेंज ऑफ द नेम्स ओनली, एंड देन व्हाट इज़ द पर्पस, कि शादी है, मुंडन सेरेमनी है, फर्स्ट बर्थडे है, कोई आपकी जुबली सेलिब्रेशन है, एनीथिंग एल्स सिंपल सा लिखना आपने कि दैट मिसेस एंड मिस्टर सो एंड सो थैंक मिसेस एंड मिस्टर अगेन सो एंड सो फॉर देयर। अब यहाँ पे देयर आएगा। ओके, अगर हमने सिंगुलर में लिखना है तो वहाँ पे डिपेंड्स, वहाँ पे हिज और हर आता है। हिज काइंड इन्विटेशन, हर काइंड इन्विटेशन। किस पे? ऑन वॉट? to their daughter's marriage, to the mundan ceremony, to the jubilee celebration, so on to their, कब है? on इस तारीख को इतने बजे। वाई डू वी राइट डेट एंड टाइम एंड ऑल दैट? ताकि उनको पता चले कि लेटेस्ट दे हैव थ्रोन द इन्विटेशन, ये लेटेस्ट हमारे को एक्सेप्टेंस आया है, कोई पुराना तो नहीं, किसी और का तो नहीं वो आ गया। तो दैट्स वाई वी हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। मैंने बोला बेटा इंग्लिश के फॉर्मेट्स में आपकी 5 चीज़ें सभी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती हैं, कि आपका उसका पर्पस क्या है, डेट है, डे है, टाइम है। हम लोगों को किसी भी इन्विटेशन में सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, बस वही हमें जब मिल जाती हैं, एंड देन वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। दैट्स इट, सिंपल वन इज देयर। Once again I repeat it. Mr. A thanks Mr. B for his. If it is his is okay. If it is her only, then suppose Mrs. A thanks Mrs. B for her kind invitation to the opening of the boutique on this date, that is on Monday at 10 a.m. Where? At Yamuna Chowk, whatever is there, and at last has great pleasure in accepting it. That's it. कुछ नहीं लिखना आपने बॉक्स के, सिर्फ बाहर लिखना है कि आप acceptance लिख रहे हो या refusal. This is how we people write it up. Now with this, I will let you know the second one comes, that is your refusal. Now you are unable to report. Suppose you have an emergency, you are caught somewhere, you are unable to attend the invitation. And in the board exam, if you get a question, just write the refusal of the invitation. ये आ जाता है, खाली इन्विटेशन भी आता है, कई बार खाली एक्सेप्टेंस भी आता है, राइट द एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, और कई बार खाली रिफ्यूज़ल भी आता है। लेकिन आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में तरह तरह का मिलेगा कि प्रॉपर बना रहे हैं, सेंटर में लिख रहे हैं। कुछ नहीं करना बेटा, इन दिस बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, यू कैन राइट ऑल दीज वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू। ऊपर आप सिर्फ रिफ्यूज़ल लिख दो और नीचे बस आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपने कॉलम बनाना है, और इसके अंदर यू विल राइट द इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? नाउ आई हैव टू राइट अ रिफ्यूज़ल। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे फिर मैंने आपका बॉक्स बनाया और मैंने ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे? रिफ्यूज़ल। क्लियर? अब मुझे इसको मना करना है, तो पहले मुझे थैंक्स भी तो करना पड़ेगा ना मना करने से पहले। तो सपोज़ मुझे अगेन वही मिसेज़ एंड मिस्टर ए
thank Mrs. and Mr. B. किसके लिए? to their daughter's marriage. A wed so and so on this date at this time, that is on so and so at. venue हो गया. but at last आप इसमें क्या लिखेंगे? but. what you write here, how you will express your inability, तो वहां पे क्या आ जाएगा? but regrets. बट रिग्रेट्स. अब आप अपने आप को माई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, बट रिग्रेट्स हिज और हर. ओके. इनएबिलिटी टू अटेंड it. why you have to give the reason? due to prior engagement. ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट. क्लियर? प्रायर एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने पहले से ही कहीं अपनी आपकी कहीं ना कहीं सेटिंग है. यू हैव टू गो समवेयर, या पहले से ही आपकी कहीं बुकिंग है, या कोई आपको पहले से कोई काम आप लोगों ने पहले से कहीं जाना है. सपोज यू हैव टू मूव आउट ऑफ स्टेशन, कोई आपका एग्जाम है, कोई आपको एमरजेंसी है. मीन्स आपको दैट प्रायर मीन्स बिफोर दैट already you have fixed the date to go somewhere else and it is very difficult for you to attend the party. is it clear to you? हम इसमें क्या करेंगे बेटा? पहले हम वही लिखेंगे, Mrs. and Mr. A thank Mrs. and Mr. B to the marriage of their daughter so and so इस तारीख को, that is on Monday इतने बजे at so and so palace. फिर उसके बाद लास्ट लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिग्रेट्स. अब यहाँ पे मैंने हिज और हर लिखा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? प्लूरल. अगर सिंगुलर है तो हिज और हर आएगा. मीन्स मैं अपने आप को हिज और हर बोल रही हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पे हिज और हर बोल रही हूँ, और मिसेज एंड मिस्टर ए अपने आप को क्या बोल रहे हैं? देयर, THEIR, देयर. ओके. इनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू प्रीवियस या प्रायर एंगेजमेंट. दैट्स इट. अब सपोज मैं खुद लिख रही हूँ, तो फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अगर तो वो लिख रहे हैं मिसेज एन, तो देन दे विल राइट दे. अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ही. अगर मान लो सपोज कोई और अदर पर्सन इज देयर, तो ही शी दे. ओके. देन ही शी दे. अगर दे है तो विश आएगा. अगर ही और शी इट है तो यहाँ पे क्या आएगा? विशेस. व्हाट दे विशेस, व्हाट डू दे विश? A newly wedded couple a happy married life. He or she wishes, they wish happy married, that he or she wishes or they wish a newly wedded couple. Sorry, यहाँ पे ये नहीं आएगा. What will come here? A newly wedded couple a happy married life, blissful life, the way you want to write up. This is how we write. That is your refusal. Is it clear to you? ये लास्ट टाइम बेटा नहीं भूलना इसको लिखने के लिए. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वी नीड टू राइट बट रिग्रेट्स. सिर्फ अगर आप इतना सा भी लिखाते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू स्कोर फुल मार्क्स. I hope so it is clear to you. Today I have discussed with you how do we write formal acceptance of the invitation. Acceptance means definitely you will be going to attend it. As I told you, अगर singular है तो आपने लास्ट में क्या लिखना है? has great pleasure in accepting it. अगर आपका plural है तो plural में क्या आ जाता है? have. Clear? सेकेंड वाला हम लोगों ने किया है refusal of the invitation. I hope so this one is clear to you. इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, not from any angle, because you don't have a time to finish your paper well on time. This is only the, you can say, shortcut to write your formal acceptance and formal refusal of the invitation. And this is what today we people have covered, that how we write formal invitation
मैं उसको दोबारा से बता देती हूँ व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर दैट। उसको हम बॉक्स में लिखते हैं, बॉक्स के सेंटर में लिखते हैं, हम इसको थर्ड पर्सन में लिखते हैं, वर्ड लिमिट इसकी 50 वर्ड्स होती है। 5 थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वन, पर्पस, डेट, टाइम एंड वेन्यू। और सबसे पहले हमेशा क्या आता है उसमें, सेंडर्स नेम आता है। फिर नेक्स्ट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अ न्यू लाइन, न्यू लाइन शुड बी गिवन। पहले हमारा क्या आएगा ऊपर, XYZ, मिसेज एंड मिस्टर। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा आपका, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस आएंगे। फिर उसके बाद आपका पर्पस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर डे आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर लास्ट में वेन्यू आएगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई टोल्ड यू RSVP आएगा, ऑन द राइट हैंड साइड आपका विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम आएगा। अगर तो वो आ जाता है वेल एंड गुड। अगर इन केस यू गेट फॉर्मल एक्सेप्टेंस, तो मैंने आपको बताया है दैट यू हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, उसके ऊपर आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन। और फिर जो जिसको डाल रहा है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिसेज एंड मिस्टर, या मिस्टर ए, मिस्टर सुधीर, व्हाट्स एवर इज देयर, है ना, दैट ही इज टू कन्वे हिज थैंक्स एंड ही इज एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि सपोज मिस्टर सुधीर थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर आलूवालिया एनीथिंग, किसके लिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू देयर डॉटर्स मैरिज ऑन सो एंड सो डेट, दैट इज़ ऑन ट्यूसडे इतने बजे एट 10 AM या 10 PM, एंड हैज़ ग्रेट, और वेन्यू भी आप डाल सकते हो, इन सो एंड सो पैलेस, एंड हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, दैट्स इट। अब रिफ्यूज़ल लिखना है तो पहले आप उनको थैंक्स करेंगे जैसे आपने फॉर्मल उसमें एक्सेप्टेंस में लिखा था, बट देयर इज़ ओनली अ चेंज ऑफ द लास्ट लाइन। क्या लिखेंगे, बट रिग्रेट्स देयर इनएबिलिटी। अगर सपोज मैं और मेरे हस्बैंड लिख रहे हैं तो देयर आएगा, अगर मैं अकेली लिख रही हूँ तो हर आएगा, अगर मैं अकेला लिख रहा हूँ तो हिज। बट रिग्रेट्स हर इनएबिलिटी, देयर इनएबिलिटी, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड इट। क्या इट, the function. Why? Due to the prior engagement, he wishes so and so, yeah, happy, you can say newly wedded couple a happy married life. With this today I just sum up all these invitations. In my next video beta, you will be watching how do we write informal invitation. Thank you beta, have a nice day and enjoy.